গভীৰ নিশা শিলচৰ চহৰৰ মাজমদিয়াত আশ্ৰম ৰোডত এটা গুলীচালনাৰ ঘটনা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হয়। পুলিচ মানুহে এজন কমপ্লেইনে আহি ইমিডিয়েট জনায় যে তেওঁক কোনোবা অচিনাকি দুৰ্বৃত্তকাৰীয়ে তেওঁলৈ লক্ষ্য কৰি গুলি কৰিছে বুলি এটা খবৰ আহিলে। খবৰ অহাৰ লগে লগে আমি ইমিডিয়েট সকলো জিলাখনত আমি এলাৰ্ট কৰি দিওঁ। এলাৰ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত আমি এইটো হস্পিটেল ৰোড আৰু যিটো 0 পইণ্ট আছে সেই 0 পইণ্টত নেশ্যনেল হাইৱেত আমি দুজন ব্যক্তিক কৰায়ত্ব কৰোঁ। কৰায়ত্ব কৰি যেতিয়া সোধপোছ কৰোঁ, সোধপোছ কালত দেখা গ'ল যে এই দুজন ব্যক্তিক আমি পাইছিলোঁ। এজন নাম ডেভিড মাৰ আৰু দ্বিতীয়জনৰ নাম খ্ৰীষ্টফাৰ ভালনাকপাৰ। তেওঁলোক দুয়োজনৰ ঘৰ টাইকুৱাল পুলিচ ষ্টেচন আৰু আইজল মিজোৰাম। এই দুইজন ব্যক্তিক যেতিয়া সোধপোছ কৰোঁ আৰু খানতালাচি চলাওঁ, তেওঁলোকৰ পজিশ্যনৰ পৰা আমি এটা অষ্ট্ৰিয়ান মেড গ্লক এটা এয়াৰ গান আমি তেওঁলোকৰ পৰা ৰিকভাৰ কৰোঁ আৰু তাৰ লগতে আমি এটা মেগাজিন ৰিকভাৰ কৰোঁ আৰু তাৰ লগতে 22 জাই এয়াৰ গানৰ গুলি আমি তেওঁলোকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰোঁ। এটা এপল আইফোন, এপল চাৰ্জাৰ, ৰিজাৰ্ভ বেগ আৰু এটা হিৰো X+ মটৰচাইকেলখনৰ নম্বৰ হৈছে MZ01AC0336। এইকেইটা তেওঁলোকৰ পৰা লাভ কৰোঁ আৰু লাভ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকৰ যেতিয়া আমি থৰো ইণ্টাৰগেশ্যন কৰোঁ, সোধপোছ কৰোঁ, সোধপোছৰ কালত তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁলোকেই এই গুলীচালনাৰ ঘটনা মানে এয়াৰ গানৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে গুলীচালনা সংগঠিত কৰিছিলে আশ্ৰম ৰোডত। আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে পলাই যাওঁতে বাইকত যাওঁতে তেওঁলোকে বোকাত সোমাইছে আৰু গোটেই তেওঁলোকৰ গাত বোকা আৰু পানীৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ আহিছিলে। গতিকে সন্দেহজনকভাৱে তেওঁলোকক আমি ধৰা পেলাওঁ আৰু ধৰা পেলাই তেওঁলোকক খানতালাচি কৰোঁতে তেওঁলোকৰ পৰা পজিশ্যনৰ পৰা আমি এইকেইটা সামগ্ৰী লাভ কৰোঁ। আৰু তেওঁলোকে মূলতঃ তেওঁলোকক যে প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে দুষ্কৃতিকাৰী হয় আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ এনেধৰণৰ এক্সটৰ্চন কাৰ্যৰ লগত জড়িত আছে। আৰু তাৰ লগতে আমি যেতিয়া বাকী তদন্ত কৰোঁ তেতিয়া দেখা গৈছে যে তেওঁলোক ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ লগত কিছু পৰিমাণে জড়িত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ কিছুমান লেনদেনক লৈ আৰ্থিক লেনদেন লৈ তেওঁলোকে এই ঘটনা সংগঠিত কৰিছে। গতিকে আমি ঘটনাটো সংগঠিত হোৱাৰ 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আমি দুষ্কৃতিকাৰী দুইজনকে ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকে পুলিচৰ হেফাজতত আছে। তেওঁলোকক আমি মাননীয় আদালতত হাজিৰ কৰিছোঁ আৰু হাজিৰ কৰাৰ পিছত আমি পুলিচি কাষ্টডিত লৈছোঁ। এতিয়া তেওঁলোকে আমি অধিক সোধপোছ চলি আছে আৰু প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত কালত দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে কোনোবা এনেকুৱা মানে অসামাজিক সংগঠনৰ লগত হয়তো জড়িত হ'ব পাৰে আমি সন্দেহ কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমাৰ জোৰ তদন্ত চলাই আছোঁ। আৰু এই সংক্ৰান্তে আমি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰাও তেওঁলোকৰ বিষয়ে তথ্য পাতি বিচাৰিছোঁ। গতিকে এতিয়া আমাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এই দুষ্কৃতিকাৰীৰ বিষয়ে তেওঁলোক আইজলৰ পৰা ইমান দূৰৰ পৰা আহি ইয়াত তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংগঠিত কৰিবৰ কাৰণে যি দুঃসাহস কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ সৈতে আৰু কোন লোক সংযুক্ত হৈ আছে আৰু সেই সংক্ৰান্তে আমি তদন্ত চলাই আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যাতে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা হয় তাৰ কাৰণে আমি অধিক তৎপৰ হৈ আছোঁ। सर ये इन जैसे तो और भी लोग होंगे जो आते हैं जिनको मारा, उनको भी आपने पकड़ा है क्या? ये ड्रग्स रिलेटेड अगर केस है किन के साथ इन लोगों का डीलिंग्स है? नहीं, जो भी है ये जो इन्वेस्टिगेशन है, पूरे इन्वेस्टिगेशन अभी ये चल रहा है। अभी इट इज़ ए प्रिलिमिनरी स्टेज, क्योंकि इसके चपेट में जो लोग भी आएंगे, क्योंकि यहाँ का इसको एक मोबाइल हम उनको मिला है और मोबाइल को जरिए हम इसको टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हमको अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें हमको नज़र में आए हैं और काफ़ी चीज़ आने को बाकी है। तो बाकी जो इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगा तो यहाँ से और हमारे पास और
कुछ इसका लिए तथ्य हमको मिलेगा तो उस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुए इसके ऊपर लॉफुल कार्रवाई हम लोग करते रहेंगे। गैंग जिससे ऑपरेट करता है, इन लोगों का कोई गैंग है जो यहाँ से ऑपरेट करता है या डायरेक्ट आइजोल से ऑपरेट करता है? नहीं, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी में इन्वेस्टिगेशन है इससे यही पता चलता है कि कुछ लोग तो ये लोग है, ये गैंग है और ये लोग मतलब वहाँ से बाइक चला के आके यहाँ पे घूम रहा है और कुछ एक मतलब लेन देन का, पैसा का लेन देन का कोई चक्कर है। तो इसलिए हम लोग पूरी तरह से इसको और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ है, अंदर में जो जो चीज़ें हैं इसको लाए और उसको जो भी इन्वेस्टिगेशन के चपेट में आएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त लॉफुल कार्रवाई हम करेंगे। अच्छा सर, जिसको मारा है सर उनको क्या नाम है? अभी इन्वेस्टिगेशन अभी हमारा चल रहा है और पर इन्वेस्टिगेशन में अभी नाम आपको नहीं बता रहा हूँ, बट हम उनको भी उनका हम इंट्रोगेशन कर रहे हैं जो क्या चीज़ें हैं, जो चीज़ें से हाँ लोकलाइट है, यहीं के लोग हैं जहाँ पे आया था और यहाँ पे वो लोग पास पहले आर्गूमेंट हुआ, आर्गूमेंट होने के बाद ये घटना मतलब घटी। तो इसके लिए हम सख्त से सख्त मतलब इन्वेस्टिगेशन जितना भी हो हम डीपली इसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसके ऊपर हम सख्त से सख्त लॉफुल कार्रवाई करेंगे। सर, যিজনক তেওঁলোকে মানে ফায়াৰিং কৰিলে তেওঁলোকৰ লেনদেন আছিল? हाँ, প্ৰিলিমিনাৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন গৈছিলে তেওঁলোকৰ এটা আৰ্থিক লেনদেন আছিল আৰু সেইটো কিহৰ কাৰণে আছিলে, সেইটো এটা ইলিগেল কিবা এটা এনেকুৱা এটা ইলিগেল ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ, গতিকে সেইটো আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাই আছোঁ। ऐसे जो अगर केस अगर मिलते हैं तो ये हमारे असम और सोसाइटी के लिए तो थ्रेट है, सामने पूजा भी है, तो आप लोग इसको नजर में रखते कैसे स्टेप्स लें? देखिए, ये जो ये लोग पकड़ा गया है और जो खबर हमको इमीडिएट मिला उसके साथ ये मेरे साथ ही हुआ ये घटना। मेरे पास कोई नहीं था, मेरे पास अपना टीम लेकर रात को मैं पेट्रोलिंग पे निकला था। रात को 1:30 बजे ये लोग को मैंने खुद एप्रीहेंड किया और मैं ये लोग को जांच पड़ताल जब कर रहा था, इंट्रोगेशन कर रहा था, तभी ये चीज़ हमारा सामने आया। तो इसलिए मैं और हमारे पूरे जो टीम है मतलब एडिशनल एसपी, डीएसपी से लेके हर कांस्टेबल बीट जो बीट हम लोगों ने दिया है, बीट कांस्टेबल से लेके हर लोग हम तैनात हैं इन लोगों का सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। और कोई भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट्स अगर कोई आता है जो पब्लिक पीस और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को थ्रेट करने वाला चीज़ है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगा।